Namaskar, my name is Gajendra Sharma and I hope I'm live as it was in the process for last many days that I would start something and go on live regularly. I planned for this and I completed this setup and hopefully now it works, I guess. So today onwards we are starting live sessions daily. It is quite late. However, in the coming days it will be somewhere between 8 o'clock and 8 to 9 p.m. And as in the short video, I told you that the entire plan of this live classes, actually it will be 5 days class, and first 30 minutes will be for explanation purpose and 10 minutes for doubt session. Regularly doubt session means whatever problem, whatever questions you may have, will try to solve. However, you should restrict yourself to the questions pertaining to the topic only. So we'll take those questions in between. These questions will be quite live, and during the class you can ask those questions. Moreover, first 3 days for first 3 days will be for uh, means exercise series. The way we are doing right now, we'll start first exercise of grammar, and last 2 days will be for explanation of various topics pertaining to literary studies or some some poems और some texts. जो भी होगा टेक्स्ट का या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में जनरली पीजी और यूजी में जितने भी सिलेबस में लगा हुआ होता है, सो अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन schedule we'll try to cover those topics also. जो जितनी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस लगा हुआ होता है, तो पोम्स का एक्सप्लेनेशन और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं क्रिटिकल थियरी या क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, उनको भी हम लेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी होंगे आपके उनको भी विल ट्राई टू डील विद दोज क्वेश्चंस. और एडिशनली यू कैन आल्सो send me some questions on WhatsApp chat so that we take those questions in the next class also. So we would try to start this class for the first time. We'll take those questions. First of all, let's start with the grammatical structure of some words. So what is the particular status of some word in a sentence? This is oft quoted question. This is one of the oft quoted questions. इस तरह के questions आजकल जनरली एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं. एक सेंटेंस दिया जा रहा है and then you are asked to tell the grammatical status of the question that is underlined or highlighted or it is bold. So keeping this in view, we'll start with this first question. So what is the grammatical function of all the underlined words that are in the questions? Just like in the first question, the people were instructed to recall the passage verbatim. The passage verbatim. Verbatim, now you have to tell the answer. Verbatim is a noun or an adjective or adverb or preposition. So what is the correct grammatical status of this particular word? Verbatim can be confused with the word verbatism, and verbatism can be confused with verbalism. So there are three means commonly pronounced words: verbalism, verbatim, and verbatism. Out of these three words, one word does not exist at all. So इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते रहते हैं जहाँ पे एक वर्ड जो ऑप्शंस में दिया जा रहा है वो
एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन वी फील दैट इट मे बी there in the dictionary. So we fall in that trap of that confused options. So if you are comfortable with the questions, you can answer those questions in the chat. We'll try to go for that. As a matter of fact, verbatim, you can simply tell the grammatical status of the word in the complete structure also. आप क्या करिए उस वर्ड की, अगर आपको पता है ये वर्ड इसकी क्लास ये है, दैट इज़ फाइन. इफ़ यू डोंट नो एग्जैक्टली द क्लास ऑफ द वर्ड, क्योंकि एडवर्ब्स और वर्ब कई बार एक ही वर्ड जो पूरा होमोग्राफ है, मतलब सिमिलर स्पेलिंग है, और वही एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज अ प्रपोजिशन, एज एन एडवर्ब, इन मल्टीपल वेज इट कैन बी यूज्ड. तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. अगर आपको कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, दैट इज़ अदर थिंग. हाउ एवर, if you are slightly confused, you can take the help of the structure of the sentence also. Now, if we take the structure, the people were instructed to recall the passage. Recall the passage, here it is verb, infinitive. And then this, this word seems to correspond this verb. Verb को अगर correspond कर रहा है ये, इसका मतलब क्या है? It tells the manner, or it tells something about the verb. और जो वर्ब को होता है फिर वो क्या होता है आपका? एडवर्ब. सो द करेक्ट आंसर इज एडवर्ब. दोज हु रोट एडवर्ब, द आंसर इज करेक्ट. नाउ विल टेल verbatim means exactly in the, in exactly similar words. When you use the exact words, when you use the same words for the expression, तो उसको क्या कहते हैं? वर्बैटिम. अब इस सिमिलर वर्ड्स आप देखिए वर्बैटिम से. Verbalism. One thing is that verbatism. Verbatism is a word that does not exist. ये आपके ऑप्शंस में डेफिनेटली दिया जाएगा, लेकिन ये वर्ड कुछ होते नहीं है. आपको ऐसा लगेगा कि दिस वर्ड एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट. सो विल टू फोकस ओनली ऑन दिस वर्ड verbalism and verbatim. Verbatim is only adverb. अगर आपको याद हो जाए तो दैट इज वेल गुड. सो वेन एवर इट इज यूज्ड, so it will be used only as an adverb. There is no other class of this word in the dictionary. एक ये safer side के लिए होता है sometimes when we know the words. So when you use the exact same words of the person concerned, of the text concerned, of the story or the passage or the paragraph, तो वो फिर क्या हो जाता है? उसको कहते हैं verbatim. या तो उसको एक adverbial phrase में convert कर दीजिए, means you have quoted this in exactly using the same words as in the passage. अब ये क्या बात हुई? ये it is longer talk. So for that longer talk, the words can be means the shorter word verbatim. ठीक? It is not verbatism. एक तो ये चीज़ है. फिर आती है verbalism. Verbalism आप अगर देखते हो उसको, so हाँ, verbatim can also be used as an adjective. इसको मैं
verbatim as an adjective. As an adjective, it can be used with a noun just like verbatim account, verbatim description. Your description is verbatim, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर लिया. और you gave a verbatim account of the place. Verbatim account of the place. Verbatim account of the place मतलब you used exactly the same words as were used in the passage, or you quoted the same words. So your description, your account of the scene, or the description that we have already studied or read in some book, तो वो सिमिलर या फिर आप उस तरह का ही उसी वर्ड्स को यूज किए हुए कोई डिस्क्रिप्शन किसी और पर्सन का भी हो सकता है. सो व्हेन टू पीपल दे हैपन टू से एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, so the account or the description or saying of other person can be called the verbatim account, verbatim description. Here it is used as an adjective. Verbalism is simply verbal expression. It is verbal expression only, and it is only noun. It can be used only as a noun. So verbal expression can be stylistic or without any ornament. वर्बल एक्सप्रेशन है वो आपका स्टाइलिस्टिक भी हो सकता है, और इट इज सिंपली फ्लैट, ब्लीक एक्सप्रेशन, इट कैन बी ब्लीक ऑल्सो. सो वर्बेट verbalism and verbatim, these two words exist, verbatism does not exist. So we'll move to the second question. It was warm enough to eat outdoors. Now the second question is, it was warm enough to eat outdoors. Now you have to tell the grammatical function of this word outdoors. Outdoors can be confused with the word outdoor. तो दो तरह के वर्ड्स हो जाएंगे आपके, एक तो आउटडोर एंड outdoors. Here lies the confusion. Here, which is to be clarified from the examination point of view. इस तरह के questions generally आते भी हैं. जो हमने एक वर्ड एक क्लास में पढ़ा हुआ होता है, हो सकता है कि उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन जो हमने डिक्शनरी में नोटिस नहीं किया, वो स्लाइट मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स इन येट अनदर डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट क्लास. कई बार क्लास चेंज होते ही मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. सो नाउ वॉइस, आई थिंक वॉइस इज क्लियर, और इज इट लो? Am I clearly audible? You can tell in in the chat.
The voice is, I think, if there is some problem, we'll try to check in the next class. Means this is the first class, so some sort of technical glitches might happen. So in the first class, usually in the initial classes, all the technical glitches or some shortcomings on the part of the technology or something like that can be taken into account. So we'll try to means adjust all these things. Then it is dark view. The face is dark when I turned, so it gets dark, I think. Anyway, we'll try to take this into account also. So, outdoors, outdoor and outdoors. So, outdoor is adjective, just like outdoor games, indoor games, outdoor games. Outdoor is usually used with some noun. Outdoor games, outdoor is an adjective, games is a noun. And then outdoors, outdoors is the answer is adverb. Outdoor is a noun and adverb. It is both an adverb and noun. Now, here in this particular sentence, in what way it is used? So, it was warm enough to eat outdoors. अब आपको अगर लग रहा है कि to eat is a transitive verb and outdoors is its object. So, it is wrong. Outdoors is a place outside your building. और sometimes outdoors किस तरह की जगह होती है that is far away from your हाउस और लोकेलिटी और ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होता उस प्लेस को नॉर्मली हम आउटडोर्स कहते हैं। और आउटडोर्स इज अ सिंगुलर नाउन। व्हेन यू गो आउटिंग, गो फॉर आउटिंग, तो आउटिंग या आउटडोर्स व्हेन यू गो फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन, जस्ट लाइक इन सम सफारी और सम जंगल पिकनिक या हिल स्टेशन, इस तरह की जगह। तो दैट पर्टिकुलर एरिया जो ओपन भी हो सकता है, इट इज सराउंडेड बाय हिल्स और ग्रास और समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड आउटडोर्स। सो आउटडोर्स अगर यहाँ पे नाउन हो तो क्या होगा? यू ईट द आउटडोर्स। ईट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड देन आउटडोर्स इज एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो इट्स बीइंग अ नाउन इज नलिफाइड। नाउन तो एटलीस्ट यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक। फिर क्या होगा? एडवर्ब, एडवर्ब का आप समझ लीजिए, इट इज वार्म इनफ, इनफ टू ईट आउटडोर्स। ये टू ईट के लिए आउटडोर्स है या फिर इनफ के लिए? बात है ये, इट इज इनफ, इट इज वार्म इनफ, वार्म इनफ टू ईट आउटडोर्स। ठीक। आउटडोर्स यहाँ पे किस तरीके से आ गया आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक। तो एज एन एडवर्ब it is in or around, its meaning will be in or around, some, somewhere outside your building, outside the building, your or the building, in or about, in or about somewhere, somewhere in, outside, outside locality, just like outdoors। और outdoors क्या है? It will be fun going to scenic outdoors,
scenic outdoors. So it will be fun going to scenic, going to a place that is scenic, going to a scenic outdoors. ये नॉर्मली एक इसमें रहेगा. इसके बाद में आपका सो द आंसर इज सी. Third question is of editing errors. So editing errors, the particular part that is underlined. Now the error might lie here in this underlined portion, just like in the first one. He was a tiny man, barely 5 feet tall, with a sprite walk. Now, sprite walk is okay, just like no error, or it is a sprightly walk, or it is simply sprightly walk, or it is the sprightly walk. The problem could be in any either in article, just like a sprite walk, or a sprightly walk, or the sprite walk, or it could be in sprite, whether it is sprite or sprightly. इस तरह के क्वेश्चंस भी जनरली आते हैं. समटाइम्स द वर्ड लुक्स लाइक एन एडवर्ब, however it is an adjective. Sometimes the word is an adjective and it is an adverb. It looks like an adjective but it is an adverb. So इस तरह की जो possibilities हैं वो generally हो जाती हैं. Similar is the case here also. What could be the answer of this question? You can tell the answer. Anyway, it is the mistake lies in sprite. Sprite is nothing. There is no word just like sprite. It is sprightly. So sprightly, a sprightly walk complete है तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? A sprightly walk ही हो जाए. Because if a sprightly walk is replaced by sprightly walk, then it is wrong. The sprite walk, sprite is incorrect. Sprite does not exist. So this answer is invalid. No error. It has an error. So ये भी invalid हो गया. Sprightly, सिर्फ sprightly cannot replace a sprightly walk. Means the complete phrase. Complete phrase should be replaced with the complete phrase, taking all the grammatical constituents. We cannot leave a single grammatical constituents. Just like article. Article अगर पूरी phrase में है तो उस आर्टिकल की मिस्टेक भी नहीं होगी जनरली और उस आर्टिकल को छोड़ेंगे भी नहीं. मतलब वी कैन नॉट लीव दिस आर्टिकल सिंपली. अदरवाइज आर्टिकल की ही मिस्टेक होती है. अगर वो फोकस होता, कई बार ये ट्रिक्स भी होती है, अगर वो फोकस होता आर्टिकल्स पर तो वो आर्टिकल्स ही होता, कुछ और नहीं होता. द कॉमन फोकस वुड बी ऑन ओनली ऑन आर्टिकल. ये भी एक चीज हो सकती थी. तो यहाँ पे क्या होगा? अ स्प्राइटली वॉक. सो पूरा अ स्प्राइट वॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा अ स्प्राइटली वॉक. इसकी स्पेलिंग कई बार चेंज होकर के आ जाती है. स्प्राइटली, SPRITELY. दिस और दिस स्पेलिंग, बोथ द स्पेलिंग्स कैन बी देयर. अगर आपके क्वेश्चन में ये स्पेलिंग आई है स्प्राइटली, दो देन इट इज द सेम.
It means lively, full of energy, lively. So it was lively walk, or it was a walk that is full of energy. इस तरह के तो ये किस तरह का वर्ड हो, किस तरह के क्वेश्चन हुए, ये लग रहा है आपका यहाँ पे चाहिए आपको, और चाहिए क्या, एडजेक्टिव। स्प्राइटली रिप्लेस करोगे आप इसमें, स्प्राइटली आपको लगेगा कि इट एंड्स इन एल वाई, सो ऑल द वर्ड्स दैट एंड इन एल वाई आर नॉट एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, प्राइमरीली एडवर्ब्स। नॉर्मली हमारे माइंड में रहती है कि द वर्ड दैट एंड्स इन एल वाई इज एन एडवर्ब, सो दिस इज रॉन्ग परसेप्शन. You have to double check. You primarily check with the dictionary. Consult the dictionary. Dictionary is the ultimate source for such kind of mistakes, such kind of confusion. किसी कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स होती है और उन बुक्स में जो वोकेबलरी बेस्ड बुक्स हैं, सो उनको इतना ज़्यादा रिलाय करना कई बार रिस्की रहता है. The ultimate source is only dictionary. Whenever you fall in some kind of confusion regarding the class of the word, the meaning of the word, तो वो डिक्शनरी से बेहतर कोई सोर्स नहीं होता. कुछ वर्ड रिलेटेड जो बुक्स होती है, वोकेबलरी रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, उनमें पूरी इंफॉर्मेशन होती भी नहीं जिस तरह की डिक्शनरी में होती है. मतलब क्लास ऑफ द वर्ड से लेकर के प्रोनाउंसिएशन, और डिफरेंट क्लासेस में क्या यूज़ किए जाए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या अगर यूज़ होता है उसका, वो भी मतलब ऑल द थिंग्स आर देयर इन ओनली इन डिक्शनरी. वो आपको डिक्शनरी ही अल्टीमेट सोर्स होता भी है. तो स्प्राइटली इज एन एडजेक्टिव, दो इट लुक्स लाइक एन एडवर्ब. एडवर्ब नहीं है ये, एडजेक्टिव ही है जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत है. विद अ स्प्राइटली वॉक, स्प्राइटली इज एन एडजेक्टिव, इट करस्पॉन्ड्स टू वॉक. ठीक, ये हुआ. द फोर्थ क्वेश्चन इज, I found difficult to understand why Vikas remained silent on this matter. एक ये क्वेश्चन आपका हो सकता है. Now the error might lie in the underlined portion, like I found difficult. So I found very difficult. I found it difficult. I find somewhat difficult. No improvement. फर्स्ट एलिमिनेशन भी हम एक तरीका ये भी हो सकता है कि एलिमिनेशन हम कर सकते हैं क्वेश्चंस का. समटाइम्स बाय फाइंडिंग द राइट चॉइस दैट वी नो, वो एक कॉन्फिडेंट तरीका हुआ. समटाइम्स वी डोंट नो एग्जैक्टली,